डेप्थ फाउंडेशन इज ए इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ फाउंडेशंस। वहाँ के लिए यूज होता है जहाँ पर आपके ब्लैक कलर सॉइल है, एक्सपांसिव सॉइल है और लूज सॉइल है। तो रॉक फाउंडेशन वहाँ पे लगाया जाता है। जैसे मैंने कहा, इट इज ए थिक स्लैब ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट, और वो पूरे एरिया में आपको, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, उसको स्प्रेड किया जाता है इन फॉर्म ऑफ थिक आरसीसी स्लैब। ऑब्जर्व दिस पिक्चर केयरफुली। तो रैफ्ट की जो स्लैब होती है, आरसीसी स्लैब, ये केवल कॉलम जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, उसके सपोर्ट करती है। उसके अलावे यदि आप लोड बेयरिंग वाल भी बनाते हैं रैप फाउंडेशन के ऊपर, तो उसको भी वो सपोर्ट करेगी। सो रैप फाउंडेशंस आर रिकमेंडेड फॉर हाई लोड्स ऑन द कॉलम, जहाँ पे सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी इज वेरी पुअर, जहाँ पर लूज सॉइल होते हैं और सॉफ्ट सॉइल होते हैं। एक बार सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी पर नज़र डालिए। रॉक की जो बेयरिंग कैपेसिटी है वह है 3240 kg पर मीटर स्क्वायर, और जो सॉफ्ट रॉक है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी 440 kg पर मीटर स्क्वायर। वहीं पर आप जो कोर्स सैंड वाली जो स्ट्रटा है, जहाँ पर फाउंडेशन ले करेंगे, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी है 440 kg पर मीटर स्क्वायर। सो यदि फाइन सैंड का देखें तो 440 kg पर मीटर स्क्वायर, और सॉफ्ट सॉइल का अगर देखें तो 100 kg पर मीटर स्क्वायर, और यदि वेरी सॉफ्ट सॉइल देखें, जो ब्लैक कटर सॉइल है, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी आपको 100 से लेकर के 150 kg पर मीटर स्क्वायर। Therefore, in that situation, the rep foundation is highly recommended where bearing capacity of soil is 150 kg per meter square to 50 kg per meter square. In case of rep foundations are subjected to heavy loading from columns, और जो रेफ्ट की जो स्लैब की डिजाइन है, इट्स अनेबल टू टेक द स्ट्रेसेस इन बेंडिंग मोमेंट, हेवी बेंडिंग मोमेंट कमिंग टू द स्लैब ऑफ द रेफ्ट। उस केस में हम जो आरसीसी जो रेफ्ट की जो स्लैब है, उसके नीचे हम ड्रॉप्स बना लेते हैं या लोकल थिकनिंग कर देते हैं बिलो द कॉलम्स, सो दैट इट कैन इजीली टैक द ऑल द लोड्स कमिंग टू द रेफ्ट। Rep foundations may also be combined with the pile foundations if your soil strata is very poor. उस केस में जो भी हमारी लोड्स आती है रेफ्ट पर, सभी वो हार्ड स्ट्राटा में ट्रांसफर होगी थ्रू द पाइल्स, एंड द स्लैब ऑफ द रेफ्ट विल बी एक्ट एज ए पाइल कैप। थ्रू द पाइल लोड विल ट्रांसफर टू द हार्ड सॉइल। इफ देयर इज लूज सॉइल, then load transfer mechanism will be skin frictions along the piles. The load coming to the raft may be lateral loads, direct compressive load, or bending. Any kind of load may be come to the RCC slab of the raft. For better stiffness of the raft foundations and stability, आप जो RCC जो कॉलम्स होती है, उसके नीचे आप बीम इम्बेड कर सकते हैं just above the raft or below the raft, so that your whole RCC slab of the raft shall be stable with full of stiffness. The embedding of beams inside the columns just above or below the raft is suitable for that types of loading where column loads are uneven and unequally distributed. Loads coming to the RCC raft foundations will generate heavy stress and bending moments. These stresses and all the bending moments generated will be taken by the RCC concretes and the reinforcement placed inside the raft foundations. As per design requirements, reinforcement inside the RCC raft slab may be provided in X and Y directions, both in upper layer and top layer as per design, and this shall be equally distributed over the whole area. If additional reinforcement is required, then it shall be in form of mesh, and this shall be placed below the RCC column and above the upper layer of the raft foundation jali. It is to note that equal spacing in both X and Y directions, both in upper and bottom layer of the jali, is provided according to your desired requirement of different diameters of the bar. According to analysis of the structures, negative bending moment will be also generated inside this RCC raft slab. So provide additional reinforcement at the top jali of the slab to take the negative bending moment. There shall be sufficient anchorage with the concrete. So 90-degree hooks are provided all the ends of this RCC raft slab. Inside the raft slab, additional reinforcement
below the columns shall be provided in form of stirrups so that shear force coming to the RCC raft shall taken care. Proper cover around the RCC work, top, bottom, side. All shall be provided according to your IS code and depending upon the location and soil conditions. क्योंकि आप जो RCC raft है वो ज़मीन के नीचे होती है और ये परमानेंट होती है, तो उसमें कवर सफिशेंट कवर रहनी चाहिए सो दैट किसी तरह की कोरोजन एक्शन नहीं हो और इसका इफेक्ट जो है सीपेज वगैरह का इसके RCC स्लैब पर नहीं जाए. सो क्लियर कवर इज मस्ट बी सफिशिएंट. Above the mesh of this RCC raft, all the columns shall be truly verticals, so that किसी भी eccentricity को अवॉइड किया जा सकता है if your column is verticals. और जो उनकी कॉलम की जो reinforcement है वो sufficiently embedded होनी चाहिए below the raft. To achieve durable concrete, the concrete while during the casting, the workmanship, material management, inspection must be there. Here is some list how to control your quality control at site. Some important checklist for quality control of the concrete. So review concrete mix design, verify material certificate for cement, examine the supply of aggregates, inspection supply of water for the concrete, review chemical admixtures detail if any, check placement of the concrete workmanship, evaluate the placement of the concrete and curing process, evaluate the formers, whether it is leak proofed or better quality of former can be used. Ensure availability of relevant records for quality assurance, collect and analyze sample from random batches, cross-check with the available official standard and guidelines. Next, evaluate the concrete finishing works at all places. Check all the reinforcement work at site as per drawing. Check the concrete strength at site as well as send samples to the standard laboratory. इसी के साथ हम दूसरे वीडियो में फिर से मिलते हैं. टिल देन टेक केयर. इफ यू आर न्यू टू चैनल देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पुट योर कमेंट्स, dash the subscribe button so that all published video will be get in time. Thank you. I am Erhari.